Good afternoon, all the teachers, faculty members from Bishop Scott Senior Secondary Girls School and Bishop Scott Group of Schools. The topic which we are going to discuss today is Adolescence Education Program. And this program will give, when we'll get into the slides, this is very important. What is adolescence? Who are adolescent? Adolescent होता क्या है? Adolescence में हम लोग किस group of people को हम लोग discuss करते हैं? That is very important. As a teacher, we are always in touch with them. हमेशा हम लोगों को इन लोगों के साथ communicate करना पड़ता है, and we are the people who are going to mold them to have a better future for them and for our country also. And sort of very self relaxation and confidence ki we have helped someone to make their own futures as a teacher. So let us see what is this adolescence education program, who brought this adolescence education program, and which school of India are mainly running this adolescence education program. And we must also adapt this education program so that this become very helpful for the students. Now, who are adolescent? Adolescent, as I discussed, what is this adolescent means? Mainly the teenagers, before teenage group, 10 to 19 years of age जो कहते हैं, that is what is called as adolescent group. Adolescents people कहलाते हैं. Growth phase early adolescence 10 to 13 years होता है. Mid adolescence 14 to 16 years होता है, and late adolescence 17 to 19 years, that is considered as late adolescence. But the more very important point we need to understand here is why we need to know about this adolescent age is it is the time ये वक्त बच्चों में जो होता है, this is a very changing phase, harmonically, and there are a lot of hormonal changes going on among the small kids, or they have to face of the maturity level is also increasing and they are able to understand the environment. Earlier होता क्या कि बच्चे हैं, they are not able to understand the things, but later on when they get into this adolescent age, उनका the way they are thinking towards the life changes drastically. Now we need to, as a teacher, we need to mold them in a proper way, and we need to train them, we need to teach them कि आगे तुमको किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजारनी है in a better way, as a better citizen of our country, to make a better future for yourself also. तो ये growing phase है और lot of changes देखे जाते हैं सारे बच्चों में, all the kids. Now objectives, adolescence education की objectives क्या होती है? What are the objectives? क्या क्या होते हैं? Adolescence age में क्या क्या objective इसका होना चाहिए? Adolescence education का क्या objective? What is the objective of adolescence education? ये बहुत important है. Enhance essential life skills for dealing with gender stereotypes. जेंडर की तरफ बहुत ज्यादा मोटिवेटेड नहीं रहे. एक एनहांस एजुकेशन देना चाहिए बच्चों को, एसेंशियल लाइफ स्किल्स के बारे में बताना चाहिए. और जेंडर स्टीरियोटाइप जो पहले से एक स्टीरियोटाइप चला आ रहा है कि जेंडर की प्रायोरिटी ज्यादा है, मेल है तो ये काम करेंगे, फीमेल बच्चे हैं तो फीमेल आगे इस चीज को आगे बढ़ेंगे. तो ये इन तरह की चीजों को वी डोंट नीड टू सी, और उनको एक इक्वल प्लेटफॉर्म बच्चों को प्रोवाइड करना चाहिए. आइदर it is a boy child or it is a girl child, doesn't matter. So they need to they must be provided equal platform जहां वो लोग अपना career in a better way में बना सके. और पुराने जमाने के जब stereotypes means old thoughts, can say the people who are thinking एक जो और सोसाइटल थिंकिंग सदैर कि नहीं बच्चे हैं, बेटा है तो ये हो गए और बेटी है तो इनको इस तरह से जिंदगी जीनी है, वो चीज इसमें थोड़ा सा we need to enhance the things. Coping and managing ARSH issues. Now what is this ARSH issues? ARSH stands for adolescence reproductive and sexual health. Now this is the age, इस एज में एक reproductive and sexual health से related बहुत सारे changes बच्चे और बच्चियों सभी में पाए जाते हैं. तो बच्चों को इनके बारे में बताना in a very positive way is very important for all of us. The physical changes, a lot of physical changes going among the kids, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके में physical changes होते हैं, that is what is called as ARSH issues. और ARSH issues को बच्चों को एक very positive approach लेकर के, mainly it is this task goes to the parents
इट इज नॉट लाइक द पेरेंट्स आर वेरी फ्री, दिस टास्क गोज टू द पेरेंट्स की इस अर्श इश्यूज को वो अपने बच्चों के साथ किस तरह से हैंडल करें. Now second is sometimes it happens that it even goes with the it even goes with the teachers also कि वो sometimes it happens कि you would have seen कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपने टीचर से भी डिस्कस करते हैं. Some teachers are very close to, अब उस the teachers need to understand कि how I need to take it, explain my student, उस बच्चे को एक वेरी पॉजिटिवली किस तरह से उसके हर चीज को समझाने की जरूरत है ताकि वो बच्चे इस चीज को ओवरकम कर सके. इफ एनी प्रॉब्लम दे आर फेसिंग दे कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम एंड दे कैन मूव अहेड टुवर्ड्स द लाइफ. नाउ हाई रिस्क सिचुएशन रहता है, वी नो दैट द सिचुएशन इज वेरी हाई बिकॉज लॉट ऑफ चेंजेस आर गोइंग ऑन, तो बच्चों को बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती है एंड रिड्यूसिंग वल्नरेबिलिटी किसी चीज की रेपिटेशन के लिए रिड्यूस हो जाता है. नाउ टू secondly, to help students to be aware of growing vital energy during adolescence and creativity using it for higher accomplishment. Now as I discussed, मैंने जैसे ये पॉइंट पहले बोला कि जैसे कोई एनर्जी बच्चों में आता है, कोई नई चीज जो नए ग्रोथ हो रहे हैं, पुट इट इनटू अ पॉजिटिव वे इन अ क्रिएटिव वे. ऐसा नहीं कि कोई चीज जो ग्रोथ हो रहे हैं दे आर लर्निंग वेरी लॉट ऑफ न्यू थिंग्स एट दैट एज, उसको बहुत नई नई चीजें बच्चे सीखते हैं. तो बच्चों को सिखाना कि उस नई चीजों को हाउ यू आर गोइंग टू पुट इट इनटू क्रिएटिव आर्ट्स, क्रिएटिव वर्क रादर देन डिस्ट्रक्टिव वर्क्स. डिस्ट्रक्टिव वर्क्स में अगर बच्चे चले जाएंगे तो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों पर, और वो दैट विल नॉट बी गुड फॉर देयर करियर एंड देयर फ्यूचर. तो बीइंग अ टीचर वी मस्ट, बीइंग अ टीचर एज वेल एज बीइंग अ पेरेंट्स, वी मस्ट टीच आवर चिल्ड्रन कि उसको किस तरह से पॉजिटिवली लेना है. नो इसी एज में तो प्रोवाइड एक्यूरेट नॉलेज टू स्टूडेंट्स अबाउट अर्श, HIV एड्स रिलेटेड इश्यूज आजकल बहुत हो रहे हैं. स्पेशली इंडिया में क्या होता है कि एक हेजिटेशन होता है, पता नहीं ये HIV या एड्स के बारे में बात नहीं करना. वी मस्ट टॉक टू द चिल्ड्रन, इसमें बात करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए. सब्सटेंस अब्यूज एंड इनकलकेट रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर टुवर्ड्स प्रिवेंशन ऑफ दीज इश्यूज. उनको इन सब चीजों में बता करके उनको बताना चाहिए कि इस तरह के कुछ अब्यूज कंडीशंस आ सकते हैं और किस तरह से हम इन चीजों से बच सकते हैं. द वेज हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम दीज टाइप ऑफ इश्यूज. तो वी मस्ट टीच द स्टूडेंट्स ये, एंड दिस इज द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट. ये बहुत इजी सिंपल ये नहीं है कि बस इजी गोइंग इट इज, ये चल रहा है. ये दीज स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट. विल सी टू दिस वन. To make available resources for additional information and adolescent friendly health services. और भी resources को available कराया जाएगा जहां पर बच्चों को additional information बताया जाएगा. एक बहुत अच्छे health service provide की जाएगी जहां बच्चे बहुत सी चीज सीख सके. Now to promote respect for the opposite sex, this is also very important. A male child and a female child must have a respect for the opposite sex. और एक पॉजिटिव हेल्दी एनवायरनमेंट ग्रो करना चाहिए जहां बच्चे और बच्चियां मिल करके पढ़ाई भी करें और इन फ्यूचर दे कैन वर्क टुगेदर. दैट इज व्हाट इज टू प्रमोट ओवर हियर. दैट इज व्हाट इज द एम ऑफ दिस एडोलेसेंस एजुकेशन. नाउ व्हाई टू फोकस, व्हाई डू वी नीड टू फोकस ऑन द एडोलेसेंस एजुकेशन. इसकी जरूरत क्या है? द रीजन इज द लार्ज ह्यूमन रिसोर्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वी कैन से दैट 22% of the human population is currently are in adolescent age. 22% की आबादी जो पूरे, you can take not only in India, throughout the world, उनका जो आबादी humans की आबादी है 22% of this, it's a big population. It's a big population. We cannot say कि इनको कुछ नहीं पता है, इनके बारे में नहीं, ये तो बच्चे हैं, इनको क्या समझाना है या इनको क्या सिखाना है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं. We must teach them. उनको आगे, they are the futures of our of our country. They are the future of us. इस एज में हम लोग हैं, we also pass that same age. तो उनको बताने की जरूरत है कि आगे तुमको किस तरह से अपने लाइफ को बड़ा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलना है ताकि you can make a better world for yourself, better life for yourself. Now caring supportive environment will promote ऑप्टिमम डेवलपमेंट फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल. एक केयरिंग और सपोर्टिंग एनवायरनमेंट अगर हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे तो उनका ओवरऑल ग्रोथ और मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा. नाउ वी डिस्कस दिस इज सम ऑफ द डिजीजेस, वल्नरेबल डिजीजेस के बारे में, डिफरेंट डिजीजेस इज देयर. उनके बारे में एडोलेसेंट्स एंड वल्नरेबल टू STIs, इन सब के बारे में बच्चों को बताना बहुत जरूरी है. सो इट इज अगेन एंड अगेन रिपीटिंग हर इसमें. यू वुड हैव सीन कि
in some diseases, it has become so common nowadays that now we will say that अच्छा नहीं ये सब बच्चों को बताना सही नहीं है, पता नहीं ये सही है कि नहीं. We must tell them, and we must tell them that what are the preventive ways, or what are the things you must take care of yourself to protect yourself from these type of